आपने लिखा, और किसने ट्राई किया है? आप आज लिखोगे और लिखा है आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट यू वर डूइंग इन द लास्ट क्लास? ओके, एंड इसके पहले क्या किया था? हाँ, ex situ and ex situ in situ. What is the difference between ex situ and in situ? डिस्कस किया था ना इनको. What is explain ex situ in situ in the class? हो गया था. नो, दैट इज नॉट. यही मिस्टेक कर रहे हो. एक्स सितु इन सितु का मेन पर्पस क्या है? गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स. कर दिया था कंप्लीट. इसमें कुछ नहीं है और तो डेफिनेशन ही है उसमें. हाँ जी, बताइए क्या होता है एक्स सितु इन सितु? एग्जैक्टली, कंजर्विंग देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इनको बाहर नहीं निकालना है अपने नेचुरल, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है. इट्स जस्ट दैट सर्विसिंग यू एट योर होम. जैसे आपको खाना चाहिए तो जोमेटो आपको वहीं पे आके खाना देगा, और अगर आप बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के तो सर्विसेज बाहर मिल रही है आपको, राइट? सो इट इज लाइक दैट. जोमेटो आपको घर पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ योर हैबिटेट. क्या है आपका हैबिटेट? होम. ठीक है. ex situ means that you have to get the animal out of its natural habitat, diagnose whatever problem it is going through, then treat it, and then put it back in the system. रख भी सकते हैं बैक इन द सिस्टम, नहीं भी रख सकते, कोई एसेंशियल नहीं है, पर बाहर ट्रीट करेंगे उनको. ठीक है. ओके, which act we have done previously? Forest Conservation Act. What is Forest Conservation Act? क्या होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? टू रिस्ट्रिक्ट. ओके, ये तो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. ट्राई टू एक्सप्लेन इट. क्या कर सकते हैं? Reforestation. ठीक है, एफॉरेस्टेशन इज द वर्ड. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि क्या नहीं है वहां पे फॉरेस्ट अच्छा नहीं, सॉरी, फॉरेस्ट एक्ट सेज दैट इफ एनी पार्ट हैज बीन रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, नेशनल पार्क बन गया, कुछ भी बन गया है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते. स्टेट डू नॉट हैव द पावर टू डी रिजर्व इट. एक बार बन गया उसके बाद पावर नहीं. यू आर न्यू इन द क्लास. What's your name? अच्छा. So you cannot do the reverse of it. आपको maintain रखना है वो चीज. ठीक है. That is required. अब again I repeat, this act was adopted to protect and conserve forests. The act restricts the power of the state in respect of de-reservation of forest and use of forest land for non-forest. आप forest land को non-forest purposes के लिए use नहीं कर सकते. What when I say non-forest purposes, what does it mean? Non-forest purposes means your commercial crops. For example, growing the cash crops. Okay, using it for your own grazing, etc. आप ये सब नहीं कर सकते हो वहां पे. क्यों? It will further deteriorate the area, right? Plantation नहीं कर सकते. What is horticulture? Vegetable, fruits, correct. Then or any other purpose. ठीक है. Now next write down the Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act 1972. What is this? It provides the protection to the
लिस्टेड स्पीशीज, जितनी भी आपकी स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, ऑल द स्पीशीज कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर वन कैटेगरी। कुछ स्पीशीज हैं वो बहुत क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ एंडेंजर्ड है, कुछ नियरली थ्रेटन्ड है। सो वी कैन नॉट गिव द right amount of, or right, I would say that we cannot keep them at the same level, right, in terms of protection. When it's like जब बहुत ज्यादा कोई बीमार है उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, right? Similarly, some species are critically endangered, then what we have to do, we have to protect them more, right? उसके लिए ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा. Can you name some critically endangered species in the country today? No, no. Who said? Tigers का तो population has improved. It has improved. I think you're talking about cheetahs. Cheetahs you were talking about. Same family के हैं, but cheetahs और tiger में difference है. ठीक है? Ancient cheetah has been extinct. Asian cheetahs has been extinct. Extinct हो चुके हैं. कहाँ से? इंडिया, मतलब इंडिया में नहीं है. There is some species which are present in Iran. Okay, we asked Iran to give us one cheetah, but they did not give us. ठीक है? Then we have to go to Namibia to ask for African cheetah. Right? इस क्या है ये African और Asian, किस तरह की diversity है? Genetic. Very good. So we have to ask, and then we get them back into which national park? Kuno National Park in Madhya Pradesh. Right? Again, their offsprings, etc., they could not survive well because it was a new habitat for them, because they wanted the cheetah should be there. ठीक है? Cheetah क्या है? It's an important part of the ecosystem. That is the one. ये almost extinct है. India से तो they are extinct, but then African cheetah we have got from Namibia. What kind of diplomacy it is known as? Diplomacy you would have heard in international relations. जब आप कोई चीज देखकर वापस लेते हैं, it's called as, एक तरीके से आप डिप्लोमेटिक, it's diplomacy. What kind of diplomacy is known as? It's known as, हाँ, it's an animal diplomacy. ठीक है, राइट? आप किसी तरह से मेरा फायदा कर रहे हैं, मैं आपका किसी तरह से फायदा कर रही हूँ. इंटरनेशनल रिलेशन में, जियोपॉलिटिक्स में, it works like that. Nothing is for free. There is no such thing as free lunch. सुना है आपने? कोई ऐसा कोई चीज नहीं होती which you call it as free lunch. Everything has its own interest. ठीक है? So this is what. अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड किया गया, ये एक्ट है. देखिए, why acts are important. Who has read polity? कितने लोगों को पॉलिटी? ध्रुव नीचे मत करो, पॉलिटी तो पढ़ा है, बताओ. पॉलिटी किस किसने पढ़ी है? अभी तक किसी ने पढ़ा है पॉलिटी? कॉलेज में पढ़ा है? अच्छा, नहीं यहाँ पे किसी ने पढ़ा है कॉलेज? आपको डीपीएससी वगैरह थोड़ा बहुत पता है? हाँ हाँ, ये थोड़ा बहुत किसको पता है? बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, बहुत मिनिमल डिस्कशन करना है मुझे. हाँ, कौन सा एक कहता है डीपीएसपी का टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा? विच आर्टिकल? 48A. ठीक है, आर्टिकल 48A says that you have to conserve the environment. अब ये डीपीएसपी है. डीपीएसपी मीन्स Directive Principles of State Policy. That states, this DPSP is meant for states, authorities, to out to do all these things. They should. It's not like कि आपका हो ही गया. जैसे Article 44, which is UCC, Uniform Civil Code, which has not been implemented yet. अभी तक implement नहीं हुआ. इसका मतलब ये थोड़ा ना अगर वहाँ पे present है तो करना ही. But then you have to make the policies in order to enforce it, because this is better for the society. ठीक है? अब एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें एक पॉलिसी 48A सेइंग दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करेगी गवर्नमेंट? पॉलिसीज बनाएगी. पॉलिसीज कैसे बनाएगी? अब वो एक्ट, व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट, इट इज लीगली मैंडेट. इट्स अ लीगल मैंडेट.
जब वो एक्ट बन जाता है तो वो लीगल मैंडेट है। अगर मैं आज कोई पॉलिसी लेकर आ रही हूँ एंड देयर इज नो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, तो उस पॉलिसी का कोई काम नहीं। दो इट इज देयर, बट पॉलिसी का जब वो एक्ट बन चुका है, जब वो एक्ट है, तो इट बिकम्स मैंडेट फॉर ऑल ऑफ यू टू अबाइड बाय दैट। ठीक है, वरना क्या होगा, फाइन्स, पेनल्टीज and strict actions will be taken against anybody who tries to violate the act. ठीक है, so this is Wildlife Protection Act 1972. So WPA provides for the protection to the, रुक जाइए मैं समझा दूं पहले फिर लिखिएगा, to the listed species of flora and fauna, establish a network of ecologically important protected area. अभी एक्ट क्यों बन रहा है, कब आया था, 48 है, कौन सी ईयर में, अमेंडमेंट के थ्रू आया है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 48 के आगे ए लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हाउ व्हेन 48 ए केम, इन विच अमेंडमेंट, 42nd और 44th, हाँ, और 42nd चेक करिए, नहीं, ठीक है, सो मैम इट केम बाय 42nd, राइट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन विच ईयर, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, 1976, हाँ, 1976, ठीक है, so this is what you have to understand, then so something is important, ठीक है, so ये अब एक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंडेट। ठीक है, चलिए, WPA राइट डाउन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, comma, provides for protection to listed species of flora and fauna and establishes a network of ecologically important network of ecologically important protected areas. Network of ecologically important protected areas. Full stop. ठीक है, full stop. The WPA empowers central and state governments to declare any area a wildlife sanctuary, comma, a national park or closed area. कहाँ से मिस किया आपने, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हाँ, the WPA empowers central and state governments to declare any area a wildlife sanctuary, comma, national park, लिखा, national park, sanctuary का spelling is this, sanctuary, comma, national park or closed area, full stop. It provides for authorities to administer and implement the act.
administer. It provides for authorities to administer. This is the spelling of administer. And means you have to take care. Administer means administratively you have to administer and implement the act, comma, regulate the hunting of wild animals. Regulate the hunting of wild animals. ठीक है? Regulate the hunting of wild animals, comma, protect specified plants and sanctuaries. Protect specified plants and sanctuaries. एक लाइन और ऐड करिए लास्ट. The act prohibits the hunting of animals. The act prohibits the hunting of animals, comma, hunting of animals except with permission of authorized officer when an animal has become dangerous. देखिए, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज has to be formed by government. ठीक है? I'll explain you कौन सा गवर्नमेंट क्या क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड बाय सेंटर और स्टेट, और नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड बाय सेंटर. हु हैज द अथॉरिटी? दैट वी विल डिस्कस. विल डिस्कस इट इन प्रॉपर वे, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है. इवन इफ इट्स नॉट कमिंग इन प्रीलिम्स, इट कंफ्यूजेस लॉट ऑफ पीपल कि कौन उसको लिस्ट कर सकता, कौन उसको डिक्लेयर कर सकता है, कौन डिक्लेयर नहीं कर सकता. सो आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड डिफरेंसेस, ठीक है, विच आई विल डू एंड गिव यू इन अ टैबुलर फॉर्मेट. ये आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन पहले ये समझ लीजिए उससे पहले जनरलाइज्ड वे में कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई क्यों जाती है. ठीक है, देखिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल पार्क आपका बनाया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम. ठीक है, किसी भी एक एनिमल के लिए, स्पीशी के लिए कभी भी वाइल्ड नेशनल पार्क नहीं बनेगा. पूरे एरिया को प्रोटेक्ट, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरऑल आप नेशनल पार्क बनाते हैं. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेसिकली फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज. ठीक है, अब देयर इज अ अपग्रेडेशन आल्सो. इफ यू आस्क मी व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन व्हिच इज गिवन, so I would rate नेशनल पार्क का फर्स्ट नंबर, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज देयर, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सेकंड. ठीक है, फर्स्ट नंबर किसको दिया है? नेशनल पार्क को. नेशनल पार्क को फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया है, और इसको कितना दिया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड लेवल. उसके बाद आएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व्स. अभी बायोस्फीयर रिजर्व अलग से पढ़ाएंगे. हाँ, प्रोटेक्शन है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व हाँ वो है. इनफैक्ट बायोस्फीयर रिजर्व सारा मिला के भी हो सकता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आएगा, उसमें नेशनल पार्क भी आएगा. अभी काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फिर आपका कम्युनिटी रिजर्व एंड योर प्रोटेक्टेड एरियाज. आई विल मेक यू राइट कौन सा सबसे ज्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, किसका कम है. उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना. ठीक है, अब क्या हम इसका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नॉट विदाउट ऑन योर ओन. किसका परमिशन चाहिए होगा? एक अथॉरिटी का परमिशन चाहिए होता है, विच वी कॉल इट एज NBWL. इसका फुल फॉर्म आई विल टेल यू. अथॉरिटी का परमिशन चाहिए होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया. अगर मैंने एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में चेंज कर दिया, तो क्या इसको वापस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर सकते हैं? नहीं.
We cannot do that. Once we have upgraded any wildlife sanctuary to national park, it cannot come back. ठीक है? So this is what. कितने लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है? अब क्या क्या लेवल ऑफ डिफरेंस होता है? जैसे देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज का भी काम वही है, राइट? सबके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, लेकिन लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग है, डिक्लेरेशन का पार्ट अलग है, पर्पस थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, तो इनके नाम भी अलग अलग है, राइट? समझ में आ रहा है? ये जनरलाइज मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज, कम्युनिटी रिजर्व्स का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे बताइए, एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए एंड लेट मी नो। व्हाट इज क्लोज्ड एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया, कोई भी क्लोज्ड एरिया प्रोटेक्टेड है, सेक्रेट ग्रुप्स है। सेक्रेट क्लोज्ड एरिया क्या होता है? इन विच यू आर नॉट अलाउड टू गो, ठीक है, तो सेक्रेट ग्रुप्स भी आएगा, कम्युनिटी रिजर्व भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपको आंसर किस पर्पज से लिखवाऊंगी? प्रीलिम्स का तो कवर होगा ही होगा, मेंस में भी अगर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो यू विल हैव अ इंट्रो आल्सो। कल हमने डिस्कस किया था कि मेंस का आंसर कैसे लिखना है, तो इसमें वो पार्ट्स भी आपके इंक्लूड होंगे कि आप कंटेंट देखें, मेरे नोट्स देखें और डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर दें। करंट अफेयर्स आपको अपने आप से ऐड करने होंगे, वो आपका व्हाट यू कॉल दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, कितना आप उसको क्रिएटिव कर सकते, फिर आपका लेवल ऐड होगा उसके अंदर, ठीक है, कितना उसको एनहांस, कितना क्रिएटिव और कर सकते हो आप आंसर, ठीक है, लिखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड equivalent spelling is this equi, I think it's equivalent, yeah, right, is a direct outcome of, is a direct outcome of urbanization, comma, industrialization and human population explosion, and human population explosion, comma, which have directly, which have directly led to, which have directly led to the catastrophic, which have directly led to the catastrophic, spelling is CATASTROPHIC, catastrophic exploitation of the nature and natural resources,
and natural resources. Full stop. The growing popularity of the concept further reflects men's deep concern over existing situation reflects deep concern over existing situation of strained global eco balance. Strained global eco balance. Strained, STRAINED. Strained global eco balance, which has posed a serious threat on his own survival. On his own survival. Right? Huh? Post. POST. POSED. Write down. A national park is an area of a national park is an area of adequate natural, comma, biological and geomorphical interest. कोई मुझे समझाएगा इस लाइन का मतलब? क्या मतलब है इसका? What do you mean by natural? Natural ठीक है, समझ में आ रहा है, related to nature. Biological means related to life. What do you mean by geomorphical? Huh? Huh? Terrain. Okay. Close enough. What do you mean by geomorphical? It is deriving from the word geomorphy. Geo means what? Earth. Right. Very good. So do not write anything without understanding. Okay. Geomorphical means earth. So anything which relates to the earth, right, which is known as geo. What is actual meaning of geomorphology? Logy means study. Whenever there will be logy in everything, biology, and then geomorphology. So logy means study. Study of geo. Geo means earth. Interior of the earth also is geomorphology. आया समझ में? ठीक है? Comma, designated and created. Designated and created by legislation. Designated and created by legislation. What do you mean by legislation? Excellent. Law. Through an act. Okay? As such, to be preserved in perpetuity. Perpetuity.
perpetuity means for long term. Very good. Perpetuity as a national heritage. As a national heritage. The term national park shall apply to an area with the following characteristics. Shall apply to the area with the following characteristics. First point, where one, फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, where one or several ecological features are not altered by human occupation or exploitation of the area. And where the plants and animals and terrain are of special scientific, educative and recreative interest. Second point, where adequate steps have been taken, where adequate steps have been taken to prevent and eliminate human exploitation or occupation of the area. And to protect biological, territorial and aesthetic features, which has led to the establishment of national parks. Next point. Aesthetic features, कुछ भी aesthetically, which is what do you mean by aesthetics? Pleasing, which are pleasing to your eyes, which having a good symmetry. There is a very common word this is used for. This aesthetic word is commonly used for nowadays, so you must be knowing, for Instagram grid. Aesthetics are good or not good. ठीक है? Right? You are not knowing this? You are not knowing this? Who knows this? सिर्फ आपको ही पता है. आपको पता है? एस्थेटिक्स के पीछे ही तो सब पागल हो रहे हैं. उसी के लिए आप ट्रैवल करते हैं, उसी के लिए आप
मतलब ट्रैवलिंग तो नहीं, आई वुड से ट्रैवलिंग तो अपना खुद का एक मन होता है, सो यू ट्रैवल अ लॉट, बट वेन एवर यू गो टू एनी कैफे, so you eat later, but you search for more of aesthetics, right? I saw one this viral something, uske andar she ordered something, hot coffee, and she was clicking for 1 hour, and then she went back and saying मेरी जो कॉफी है वो ठंडी हो गई है. Obviously 1 hour के लिए आप सिर्फ aesthetics के पीछे भागते रहेंगे, right? You getting my point? आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, आप लोगों को नहीं पता होगा. आप अच्छा ठीक है, राइट? कैफेज में आप क्यों जाते हैं? यू सी फॉर एस्थेटिक्स, एस्थेटिकली कौन सा अच्छा प्लेस, एंड यू ट्राई टू सिट एट दैट प्लेस ओनली. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. ठीक है, ओके. सो Japanese, I think Japanese are, for example, people, I think Southeast Asian countries, they are very good at it. What I've seen, that they're very good at maintaining all that. I don't know, somehow very natural. So that is what I have found. Okay, so she is asking, picture खींच के डाल देना is aesthetic. How you will explain aesthetics to me? Can somebody help me out with this? बताओ. I'll show you after the class कि क्या मतलब है actually, मतलब किस reference में I'm telling you. ठीक है, okay. Now move to the actual part. Okay. Okay. So where adequate steps has been taken to prevent and eliminate human exploitation. लिख लिया आपने ये? Okay. Third part is, write down, guys. Third. Where visitors are allowed to enter. Where are visitors allowed नहीं है वैसे. We always write under this, no visitors allowed except. ठीक है? So I'll make you write this. Where visitors are allowed to enter under special conditions. Under special conditions for inspirational, comma, educative, comma, cultural and creative purposes. Cultural and creative purposes. Next is fourth point, where no grazing of livestock. Where no grazing of livestock. No grazing of livestock. LIVESTOCK, livestock is allowed. Livestock means what? The goats, deer, etc. Okay. Write down next. In national park, human activity. In national park, human activity is not allowed. Is not allowed. Full stop. Also, the grazing of livestock and private tenurial, tenure से बना है tenurial, TENURIAL, tenurial rights are not permitted. Rights are not permitted. Full stop. The species that are mentioned. एक सेकेंड में आपको स्केड्यूल की बात बता दूं. How many of you know schedules of Wildlife Protection Act? देखिए, schedule of
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके पहले थे 6 schedules वर देयर। कब तक? 2023 तक, 22। हाँ हाँ, नो इट्स ओके। तो 6 schedules वर देयर like this: schedule 1, schedule 2, 3, 4, 4th में we used to put plants, 5th में vermins, right? So first we used to put those species which are highly they need the protection, critically endangered, they need extra protection, schedule 1. फिर आपका schedule 2 में which require less, then schedule 3, 4th में plants, 5th में vermins and 6th में something else, ठीक है? So this is what 6 थे पहले आपके schedules, ठीक है? अभी ये यानी कि हट चुका है ये, ठीक है? अब फोकस किस पे करना है? अब 4 schedules हो चुके हैं आपके। रिसेंटली वी हैव गॉट 4 schedules। वही schedule 1 में वही एक्स्ट्रा आपका जो हाईली प्रोटेक्शन जिसको रिक्वायर्ड है, देन schedule 2, schedule 3 एंड 4th, ठीक है? किससे इंस्पायर्ड है? IUCN जो एक्चुअली साइट्स जो होता है CITS जो आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया नहीं, बस इतना समझ लीजिए, बिकॉज साइट्स को भी पढ़ना जरूरी है अभी आपको। अब ये सब पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी कि हाउ दे हैव बीन डिवाइडेड, ओके? दिस यू हैव नॉट रेड साइट्स एक्सेट्रा, अभी आप पढ़ेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, देन आई एक्सप्लेन दिस अगेन पार्ट अगेन कि schedule 4 में आपने जो किया है रिसेंटली वो किस बेसिस पे किया है, ठीक है? अभी के लिए जस्ट रिमेंबर 6 schedules नहीं है, अब 4 schedules है, ठीक है? बहुत ज्यादा आपकी जो बुक्स हैं, बिकॉज दे मस्ट हैव नॉट आई थिंक रिकरेक्टेड इट दिस पोर्शन, जो आपके पास पुरानी बुक्स होंगी या कुछ भी हो गया रेफर कर रहे होंगे आप, उसमें हमेशा 6 schedules आएगा। नाउ यू हैव टू करेक्ट इट, 6 नहीं 4 schedules है, राइट? ठीक है, नाउ राइट डाउन the species that are mentioned in the schedule of Wildlife Act, the species that are mentioned in schedule of Wildlife Act are not allowed for hunting and capturing. Hunting and capturing. Can you tell me one of the parts of any species which is highly traded? Ivory, yes, very good. Then one-horned rhino. One-horned rhino are only found in काजीरंगा, ठीक है? और रेस टाइगर व्हाट? ओके, स्किन, एंड एलिफेंट का मोस्टली आइवरी। You know, crocodile, there is one person who was caught on airport. He was taking what in his bag? A big crocodile. Yes. Huh. And it happens oftenly. He was taking big crocodile in his bag. He must have known that there must be scanning which will happen. Somehow you will get, the authorities will get to know. Scanning was strict hoti hai airports pe. And they get multiple, like, good amount for that. Extremely good, because they are rarest of the rare, kuch species. And then you make different. There was one of the luxury brand which used to support the formation of their bags was actually from the crocodile skin. What was the name of this luxury brand? Now they claim that they have stopped using it. Hermes, right? H is silent in it. HERMES, like this. H is silent. Even Gucci claims that we are not using anything. ठीक है? Earlier they used to say because of the exclusivity
that our bags are made up of like crocodile, etc. But अब जब internationally they've got into the spotlight because of all this act, because it's not allowed using the skin. So now they have started claiming we are not using. Okay. Now write down. First off, no person can remove, comma, exploit or destroy. No person can remove, comma, exploit or destroy. मिस कर दिया आपने कुछ, ठीक है, और destroy the habitat of any wild animal or deprive any animal of its habitat. A very important point which I was telling you, also they cannot be degraded to the level of century. Also they cannot be degraded to the level of century. Full stop. Both central government and central government and state government, both central government and state government can declare national parks. Can declare national parks. But the alteration of the boundaries of the national park shall be made except on the resolution passed by state legislature. Alteration of the boundary. Write down alteration of the boundary of national park shall be made except on a resolution of national parks, resolution passed by state legislature. Write down. Or we can say that alteration to a national park's boundary can only be made on the recommendation of National Board for Wildlife. National Board for Wildlife, ब्रैकेट में लिखेंगे NBWL, wildlife. And with the state legislature approval under WPA Act, 19
72. And what is after legislature approval? Okay, telling you wait. Comma, under Wildlife Protection Act, comma, 1972. Full stop. This process is crucial. This process is crucial to maintain the fixed, comma, defined boundaries that protect the area. The area. Okay. First revise, take your time, 2 minutes, and then let me know if you're not getting anything. Hmm? Hmm? क्या? Tenurial rights. टेन्योर के कॉन्ट्रैक्ट पे लेते आप? कॉन्ट्रैक्ट किसी एरिया का. बताया तो है. State.
ऑलराइट क्लास, एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा, पूछिए। Ask me if you have any doubt. अगर चेंज करना होगा तो NVWL पहले देखिएगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्टेट रेजोल्यूशन। स्टेट रेजोल्यूशन पास करेगी ना कि ठीक है नाउ वी हैव टू डू इट, दोनों मिलकर, दोनों जगह मतलब ठीक है, ठीक है एवरीवन, ओके, शैल वी गो फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ? ठीक है, राइट डाउन, wildlife sanctuaries refer to an area. Wildlife, online students, do you have any doubt? Okay, so wildlife sanctuary refer to an area that provides protection, protection, that provides protection and living conditions favorable to wildlife sanctuary refer to an area that provides protection and living conditions favorable to wild animals, favorable to wild animals, ठीक है, full stop. On the other hand, national park provides, on the other hand, national park provides the protection to the entire ecosystem. This is the difference I was talking about. The national park are made for conserving the entire ecosystem, but wildlife sanctuary coming from the world wildlife itself, it shows that it is meant for wildlife. ठीक है, full stop. Which in, okay, full stop, that's it. The wild in wildlife sanctuary, in wildlife sanctuary, comma, the wildlife and its habitat, in wildlife sanctuary, comma,
wildlife and its habitat are protected from any disturbances. Second, wildlife sanctuaries are famous for wildlife conservation. Wildlife sanctuaries are famous for wildlife conservation, comma, which includes animals, comma, insects, comma, microorganisms, comma, birds of different genes and species, right? It ensures that a substantial, it ensures a substantial population of wildlife is maintained. Next point. Wildlife sanctuaries have fewer restrictions than the national parks. National parks. पता नहीं क्या बोल रहा है सर. They're national parks, right? Next, the official permission is not required to visit a, the official permission is not required to visit a wildlife sanctuary. Next, the boundaries of wildlife sanctuaries. The boundaries of wildlife sanctuaries are not sacrosanct. What do you mean by sacrosanct? What do you mean by sacro? What is the literal meaning of sacrosanct? पहले लिखिए फर्स्ट राइट. बताइए व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सैक्रोसेंट. आप अज्यूम क्यों कर रहे हैं? सैक्रोसेंट का मीनिंग बताइए. सर्च इट. यहाँ पे देख के कैसे पता चल जाएगा? Okay, so what is the first line which is written? It's very important. The boundaries of wildlife sanctuaries are not sacrosanct. हाँ तो सीटी है. टी मैं बार बार बोल रही हूँ. sacrosanct.
सेंट, टी, टी, मैं बोल रही हूँ बार बार सेक्रोसेंट। वो टी यहाँ पे दिख ऐसे कर रहा हो, देन आई डिडंट पुट दिस, सेक्रोसेंट ही लिखा है वो। सेक्रो, अच्छा सबने सैंड लिखा है क्या? ओ गॉड, मैं बोल भी रही हूँ सेंट। दिस सेक्रोसेंट बोल रही हूँ मैं। इट मीन्स, हाँ, ओके, सेक्रेट। सो बेसिकली इसका यहाँ पे मतलब ये है दैट नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्रीज हैं वो ऐसा नहीं एक बार बना दिया तो यू कैन नॉट, मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स इन सेंस दैट जैसे नेशनल पार्क है दे आर टू फिक्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये, क्योंकि आप इसको गूगल अभी आपने खुद किया अपने आप से, सेक्रेट मीनिंग आ रहा है, तो विच इज मेकिंग नो सेंस फॉर यू कि इसका क्या मतलब आप लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, जैसे हम किसी लॉ में भी यूज करते हैं, कौन से लॉ में, किसी भी लॉ में भी यूज करते हैं, दिस लॉ इज नॉट सेक्रोसेंट, कितनी बार यूज होता है पॉलिटी में, सुना है, द लॉ इज नॉट सेक्रोसेंट। हाँ मतलब ये, हाँ राइट, कि ऐसा नहीं है कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, सेक्रोसेंट का मतलब ये, सेक्रेट आप देखेंगे गूगल के ऊपर तो सेक्रेट लिखा आएगा, तो इसका मतलब ये है, पर ये नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। हाँ हाँ, नॉट फिक्स लिख दो, नॉट फिक्स लिख दो, क्योंकि लॉज में भी काफी जगह पॉलिटी पढ़ी है किसी ने लक्ष्मीकांत से, वहां पे लिखा होगा, अभी पढ़ेंगे, आपसे पॉलिटी स्टार्ट नहीं हुई आप लोगों की, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, राइट डाउन, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड, अच्छा हो गया, ये लिखा ना, ये पूरा लिखना है ना ये। However, national parks have completely delineated boundaries. अलग से, write down last point. Limited human activities are permitted. Limited human activities are permitted in wildlife sanctuaries. Limited human activities are permitted. कौन से लोगों को परमिट होगा? जो वहीं पर आसपास रहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। But in national parks, they are strictly prohibited. They are strictly prohibited. That's why national parks are highest, having the highest level of protection. ठीक है, कुछ some of the famous national parks लिख लीजिए. Some of the famous national parks in India are the Great Himalayan National Park in Himachal Pradesh. Next, the Great Himalayan National Park in Himachal Pradesh. Valley of Flowers, Valley of Flowers, Valley of Flowers, Flowers, ठीक है, and Nanda Devi National Park in Uttarakhand. Keoladio, Keoladio
national park in Rajasthan. Keoladeo National Park in Rajasthan. Next, Nokrik National Park. Nokrik. National Park in Meghalaya. Kaziranga. Kaziranga and Manas National Park and Manas National Park in Assam. Sundarbans National Park in West Bengal. ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है, कुछ ही मैंने आपको बताए हैं। जब ये नेशनल पार्क बनाते हैं उस एरिया में जो पीपल रहते हैं ट्राइबल्स हैं उनका वहाँ पे रहते हैं नहीं, उनको रहने आई थिंक देखिए फॉरेस्ट इसी के ऊपर एक हमारा एक्ट है विच इज नोन एज फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट एक्ट 2006, ठीक है। इसमें पहले क्या था कि पीपल यूज टू सेंड देम, बट नाउ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द थिंग्स लाइवलीहुड, तो वो अलाउड है, पर कोर एरिया में जो आपका मेन एरिया है उसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाँ, आउटस्कर्ट्स में वहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। कौन सा नेशनल पार्क? केमुल लामचाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए? I don't think so. I think no, it is not. I cannot recall it. वो कुछ तो है लेकिन yes, it is Corbett National Park. Okay, so I'm telling you some of the names of the parks. Okay, this you can get easily. या फिर I can get a print of this. ठीक है, या I will upload it on the site. आपका जो भी पोर्टल है, सुन लीजिए, नेशनल पार्क को आई विल अपलोड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क क्या क्या है, या फिर विल कैन मेक राइट इन द क्लास, बट आई थिंक दिस इज वेरी मगिंग वाला थिंग, so better I'll upload it on the portal. ठीक है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर लिखिए मत, सुन लीजिए बस, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। टोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा असम, मानस असम, बंदीपुर कर्नाटका, ठीक है। These are some other national park apart from that we have discussed. ठीक है, अब टोटल जितना भी हम यूज करेंगे, जितना भी नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अपलोड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, देख लीजिए, इफ सम डाउट यू हैव ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी पूछ लीजिए अपने डाउट्स प्लीज। पता है मुझे वो कहाँ पर है।
मणिपुर में। कौन सी लेक है वहां पे? लोकटक लेक। ठीक है, ठीक है। पेन है? ओह गॉड, आपने इतनी बड़ी बॉडी लिख दी इसकी। कितने पेजेस में लिखा है? ये आंसर यू रिटन इन 4 पेजेस, ओनली 250 वर्ड्स। इंट्रो इतना बड़ा? इंट्रो अच्छा स्टार्ट किया वैसे। इसमें ये एक्सप्लेन नहीं करना था जेनेटिक एक्सेट्रा, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज इट इज आस्किंग अबाउट इंडिया, हाउ इट हैज चेंज द डिफरेंट सेक्टर्स, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये थोड़ा इररिलेवेंट, बॉडी इंट्रो इज स्टिल फाइन, बट इंट्रो बड़ा बहुत है, which you have to reduce in only 4 lines, only 4 lines या max 5 lines कर सकते हैं। हाँ, ये आपने सही लिखा है। प्रोग्राम जो आपने ऐड किए, इको सेंसिटिव जोन्स, दिस इज यू हैव डन राइट। इसमें आपको ना वेरियस सेक्टर्स में इंडिया ने कैसे कैसे चेंजेस लेकर आए हैं, वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। आपको आ रहा है समझ में क्या डिमांड क्या है क्वेश्चन का? ठीक है, मॉडल आंसर्स मैं आपको लिखवा दूंगी, देन यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, गुड गुड ट्राई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच क्लास। ओके, प्लीज रिवाइज।